with the fine aggregate, then it will be called mortar. And if mortar is mixed with the coarse aggregate, then it will be known as concrete. Mortar plus coarse aggregate mixtures, and sometimes we use admixtures for different purpose. Then it is called concrete. Admixtures may be mineral structures, mineral or chemical admixtures. Just a minute. अभी तुमको लेके नहीं आना था, ध्यान दिए, सब मत लेके आना। नेक्स्ट, व्हाट इज सीमेंट? सीमेंट generally known as hydraulic cements. Why it is known as hydraulic cements? If I add water with, then cement will react with the water very quickly and it will be hardened, and therefore it is known as hydraulic cements. Cement itself is a combination of limestone, clay, cement rock, iron, and other iron, and it is blended and heated up to temperature 1200 to 1500 degrees centigrade. And this product is known as clinker. And now clinker is grounded in a fine particles, and then it will be uniform consistent powder, and gypsum is further added to control the setting time of the cement. This is basically a method for manufacturing of the cements. And I am coming to fine aggregates. सभी छात्र प्लस सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में एक मॉड्यूल होगा आपका कोर्स का बिल्डिंग साइंस का, उसमें आप सीमेंट्स का कंपोजिशंस, कंटेंट, कॉम्बिनेशंस यू हैव ऑलरेडी रेड. फाइन एग्रीगेट्स जनरली अवेलेबल है, इट इज अवेलेबल अराउंड अस. फल्गु के रिवर में हम लोग के सैंड यहाँ पर यूज होते हैं, बट दिस इज नॉट ए गुड सैंड. सोन रिवर सैंड जो इट इज ए गुड वन, जो डेरियन सोन में मिलेगा. फाइन एग्रीगेट्स will be defined on the grading size of the aggregates based on the dimensions. And if the size of the aggregate is less than 4.5, it is stipulated in IS code 3831970, then it is called fine aggregate. Coarse aggregate. What is coarse aggregate? If the size of the crushed stone is greater than 75 mm, हमारा वहां पर पिक्चर दिखाई पड़ रहा है, पिक्चर दोनों दिखाओ. Then it is known as coarse aggregate. Now I am coming to the chemical admixtures. There are different type of admixtures. Air entertainment admixtures, accelerator, retarders, and water reducer. Air entertaining admixture add, what is this? It will create a microscopic air bubbles, or छोटे air bubbles will be created inside the concrete. It will enhance its resistance to freeze-thaw cycle. What is freeze and thaw cycle? That we have to understand.
when the temperature where we are going to cast a concrete is less than 0 degree or 0 degree, then what will happen? Water will freeze and it will expand about 9% in volume. As this, the water in moist concrete freezes, it produces pressure in the pores of the concrete. And the accumulated effect of successive freeze-thaw cycles will disrupt the paste and aggregate, and it will eventually leads towards expansion and cracking and crumbling of the concrete. And for that we add the admixtures, air entertaining admixtures, microscopic air bubbles, and makes the concrete easier to finish. And one other is accelerator. Accelerator means admixtures. Accelerator will speed the setting time of the mixture, enhancing finishing operation to begin sooner. Useful during the cold weather pouring. कोल्ड वेदर में एडमिक्सचर्स एक्सीलेटर की जल्दी से जल्दी मेरा सीमेंट सेट कर, तो वी यूज एक्सीलेटर. रिटार्डर्स, it is just opposite to the accelerator. It will slow the setting time of the concrete. Why it is needed? Sometime you see the mixer machine, the concrete is mixed at some other place and it will be transported for casting at some another place. Then these retarders will act as a catalyst and reduce and increase the setting time of the cement. Retarders will increase the setting time of the cement, and therefore we will get time for finishing of the concrete during hot weather. Then another type of admixtures is water reducer, which is used to reduce the amount of water in the concrete. And we need, say, slump, we need 100 mm. Then if we add the admixtures and decrease the water content, and you will get the same slump. And this type of admixtures will reduce the amount of water required for a given slump. It will create a ball bearing effect inside the concrete, making the concrete easier to finish and produce better cement hydration. By reducing the amount of water required, dissolved, because concrete is directly related to water cement ratio. Dear students, try to understand the water and strength is inversely proportional. If water content is more, strength will be less. There is an inverse relations between water in the concrete and strength, and therefore we should minimize the water content. Now in totality, how concrete is defined? We can say it is a versatile concrete and may be manufactured with the locally available materials. Aggregate, sands, water, all the three components are locally available in abundance. However, cement is imported, admixture is also imported, and it is versatile as it has good resistance to fire, resistance to corrosion. Nobody can think a road from the steel, dam from the wood, but concrete will be used everywhere. The road will be constructed by concrete, building will be constructed by concrete, dam will be constructed by concrete,
and therefore it is a versatile material, and it is easier to mold in any shape and size, and it is also economical, and therefore in the world it is largely consumed material on this earth, on the globe, and therefore concrete is the versatile material. Now you see, these type of structures would not be possible by steel or by wood. It will be only possible to construct this high tower due to penetration of the concrete. Of such dimensions, we are not able to see that this long tower would be possible by steel or by any materials, like wood also is a construction material. And how we have developed the manufacturing, making of the concrete or RCC structures. You see, this is the flyover. It is also not possible without using of the concrete. Now you come to the making a good concrete. A good concrete will meet the strength requirement, which will be measured by the compressive strength, and it should fulfill the durability requirements to resist the environment in which the structure is expected to serve. It should be easily mixed, transported, compacted as early as possible, as efficiently as possible, and it should be economical as possible. What is durability of the concrete? Durability of the concrete is defined as the ability of concrete to withstand the harmful effects of environment to which it will be subjected during the service life, without undergoing into deterioration beyond acceptable limits. Suppose in a concrete, the water from the rain is absorbed in form of moistures due to void and porosity. Then steel inside the concrete will be corroded and it will collapse, and therefore durability requirements violated. Durability can be assured keeping in view the environmental exposure of the structures, certain minimum cement binder content, maximum limit on WC water cement ratio, and certain minimum grade of concrete for the particular exposure. What type of exposure? There are different type of exposure, starting from mild, moderate, severe, very severe, and extreme, which is defined in IS code 456. What we should do to make a durable concrete? The first requirement for making the durable concrete is reducing the porosity and permeability of concrete. It will be only possible to reduce the environmental attacks on the concrete by reducing water cement ratio. And it should be compacted or making it dense, which will prevent the ingress of harmful elements to the concrete. And if we are able to prevent the ingress of the harmful elements in the concrete, suppose in an area where there are certain number of chemical industry are there in that area, therefore some chemical compounds will be deposited on the structures, and
it is with mixture of rainwater or environmental moistures, it will ingress inside the concrete. Then what will happen? Again, the steel will be corroded and the whole structure will corrode. And therefore, we have to make a dense and compacted concrete. And therefore, making a good concrete means we have to use good quality raw materials. Means aggregate sand should be free from any type of undesirable materials like mud, clay, any type of organic materials. Then we should focus towards the proportioning of materials accurately as per the stipulations made in our IS code 456 and IS 10262. Proportioning, then we have to mix it properly, transporting it, placing it at the desired place, compacting it and curing it. These are the operation involved. Cement, which is most important, imported materials, to see the cements, whether it is a good cement. हेलो, म्यूट कीजिए उसको. Then to recognize the cements, whether it is a good cement or a bad cement on the quality parameters. You see the bag of the cements. First of all, you should see whether IS logo is there or not. If IS logo is not there on the bag, then it may be a nakli cement in a different bag. On the bag, the year of manufacturing, month of manufacturing will be there printed. You have to check. If the cement is more than 3 months old, strength will be reduced by 20%. Therefore, first of all, we should check the cement bag for IS specifications and date of manufacturing of the cement. And if you open the cement bag and insert your hand inside the bags, if it gives you a cool feeling, then it is a good cement. You take a small amount of cement in your hand and throw it in a bucket. And if it floats for some time and then settle, then we can say it is a good cement. You should also see whether there is any visible lumps in the cement or not. And if you are observing that there are lumps, therefore it is a bad cement and it may be discarded. Lumping क्यों होता है, छोटे छोटे रोड़ी क्यों बनते हैं? Because of the ingress of the moisture from the atmosphere. तो ज्यादा दिन का सीमेंट का बैग हो जाएगा तो मॉइस्चर इनग्रेस होगा इनसाइड द सीमेंट्स बैग और पानी के साथ मॉइस्चर के साथ सीमेंट रिएक्ट करेगा. तो मैं पहले बता चुका हूं कि इट विल फॉर्म ए सीमेंट मोटर. तो वह छोटे छोटे जो है उसके बॉल बन जाएंगे. दैट इज कॉल्ड लंप. एंड इफ इट इज ए लंप सीमेंट्स विजिबल टू यू, देन इट शुड बी डिस्कार्डेड फॉर यूज. Now it is a fine powder, which I have already discussed, and how you should select the good quality cements. However, there are laboratory tests for the cement also to check the quality parameters. First of all, you should test the cements for a specific gravity.
how much is the specific gravity of the cement. Again, you should find the initial setting time and final setting time of the cements. Then you should test whether it is accurate on the consistency parameters, and then you should check the soundness of the cements. And finally, you should test the strength of the cements. All these are the laboratory tests. And it is a very interesting topic for the project work for the third year and final year students. You can pursue project on this and you will get 10,000 rupees from Bihar Council of Science and Technology for purchasing cements, aggregates. Recently, 10 students of our students have received 10,000 rupees from the BCST, Bihar Council of Science and Technology, but students are not interested. They have not spent the money till date, and it is very sad affairs for at the part of the students. At least from the home, you can start your project work, take the money from institute, spend it and make a project. And from binding, paper purchase, typing, everything you have got from the BCST. And here students from the third year can select this concrete mix topic for your project work. Now, dear student, you should know what type of cements are available in market. There are 18 types of cements recognized by Bureau of Indian Standards, and more commonly used around us is ordinary Portland cement. And it is specified as 33, 43 and 53. 33 means the strength of the characteristic strength of the cement mortar is 33 megapascal or Newton mm square. 43 means strength is 43 Newton mm square or 43 megapascal. And 53 means strength of the concrete cement is 53 megapascal or Newton mm square. The OPC grade is classified in 3 brands: 33, 43, 53. Another type of cement is blended cement, PPC and PSC. Portland Pozzolana cements and Portland slag cements. Sulfate resisting cements, low heat Portland cements. Hydrophobic Portland cements and colored cement, which is known as white cement. Recently, we have organized a discourse on the white cement, and the JK Cements executive officers has delivered a lecture on white cements. These are the civil engineering structures. Now, to come to the gradation of aggregates. Densely packed graded aggregates, less voids. Densely packed graded aggregates means there should not be void. Graded means you are mixing 20 mm aggregates with 10 mm aggregates and some fine sands less than 4.7 mm. Then all the space inside this box you see is packed, and therefore it is known as densely packed graded aggregates. Now, single size aggregates. Suppose you are using the 20 mm size aggregates, less than 20 mm size aggregates, then void will be there. Now there is a gap between two aggregates, you see. Empty space will be there, and it is not a good aggregate. It is not good sign of aggregates, and therefore the single size aggregates will be mixed with the smaller size aggregates, mixed with the sand to make it more dense and minimize the voids.
here you see more voids are there, which is not good for making concrete. Now, how aggregate size will be graded, decided? It will be decided by sieve analysis. And sieve is nothing but, गांव में कहते हैं चलनी आटा चालने वाला, वही चीज है यह, simple. Or making a grain size analysis of the aggregates and sand both. Now, as per IS 383, the sand is divided in zone. They are divided in 4 types of zone: zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, depending upon the sieve analysis. I told you earlier that the size of the aggregates less than 4.75 mm, it is specified as sand. Now you take a sieve 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm size sieve, then 600 micron, 300 micron, and finally 100 micron. So grade zone 1 to zone 4, starting from very coarse sand to coarse to medium and fine. If the sand is more fine, then water requirements will be more. And therefore, if the sand is more coarse, then water requirement will be less. Therefore, preferably engineers should avoid very coarse sand and fine sand also. We should use coarse and medium zone sand for making concrete, zone 2 and zone 3. This table is given in IS 383. My dear students, it is also reproduced in the books of building science. And you should see in zone 1, for example, you take 90 to 100% sand is passed through 4.75 mm sieve, and 60 to 95% pass through this. Means 2.3236 per it is retained. But you enter in zone 2, 75 to 100% pass through 2.36 also. And 1.18 mm sieve per zone 1 में 36 to 70 will only pass, but here 90% will pass. On 600 micron, 15 to 34% will pass, but here 59% will pass, and so on. This is the gradation limit of the fine aggregates. Gradation limit of the coarse aggregates. Preferably for any type of constructions, 20 mm mean size of the aggregates, maximum size of the aggregates are permissible. The maximum size of the aggregates for any constructions should be limited to 20 mm. आप सुनते होंगे अक्सर 20 mm डाउन, ऐसा सुनते होंगे, 10 mm डाउन. मतलब जो भी एग्रीगेट्स होगा, the size of the aggregate should be less than 20 mm. And 40 mm से less aggregates का कहाँ यूज करते हैं? In making a road constructions, 40 mm का. और फिर डैम वगैरह में भी यूज करते हैं. But preferably for any type of constructions, 20 mm less aggregates will be more preferable. And it is again I have taken from the table, I have taken from the 383, IS 383. Suppose 20 mm mean size aggregates, it will 100% will pass through the 40 mm sieve, and 95% to 100% will pass through 20 mm sieve, and from 10 mm sieve it will pass 25 to 55, and 4.75 mm sieve it will
pass only 10%. And every aggregates will be retained here at 4.75. I have already told you the aggregates more than 10 mm, 4.75 mm will be classified as coarse aggregates. And this is the grading limitations of 10 mm aggregates. 100% will pass through the 40 mm and 20 mm sieve. And 10 mm sieve se it will pass 40 to 85%, and 4.75 se it will pass 0 to 10%. Now we have to test the aggregates for analyzing the strength. There are three types of tests. One is aggregate crushing value test. Another is known as impact value test. And another type of test is abrasion test. Now, for all these tests, you have to see the limits that if you are going to crush the aggregates, it will not crush by amount of 30%. Only 30% is permissible. Impact value test के लिए again you are going 30% is permissible. Abrasions के लिए Los Angeles abrasion test 30% will be permissible. And if you are taking a project in mixed design, you have to repeat the same experiment which you did in second year. And for other than the wearing surface means road वगैरह का जो constructions होगा उस पर ये इतना allowed है. Other than wearing surface, जो wearing surface नहीं है, crushing value is allowed up to 45%. Impact value is also allowed up to 45%, and abrasion value is allowed up to 50%. Again, I have taken this value from the IS 383. Properties of aggregates. You should see, जैसे सीमेंट्स के बारे में हमने बताया, एग्रीगेट्स का भी आपको देखना होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है. It indicates density and crushing strength. So first of all, you have to compute the value of a specific gravity in the laboratory by laboratory test. Surface textures, it will be observed by you by your naked eye. If it is rough, then it is good for proper bounding. Particle shape, it should be cubical, not flaky. Flaky means ये लंबा नहीं होगा and not elongated. Porosity, it will have a very low capacity to absorb the water. आप अच्छे ग्रेड्स के एग्रीगेट्स को आसानी से रोड पर मकान बनते हुए देखेंगे, जो ब्लैक होगा, हार्ड होगा, क्रस्ट होगा, रफ, treated as a good aggregates. It should be chemically inert, impurity. It should be free from any type of materials, clay, vegetables, mix, dust. It should be free from that. And before using, you should sieve it. इसको साइड पर सीव करना है. You should segregate the undesirable materials mixed with the aggregates. And it should be graded for reducing voids. Grading का conditions हमने compactness का दो फिगर दिखाया कि how it will be compacted. If it is mixed with the bigger size aggregates, mixed with the smaller size aggregates and sand, then it will be a compacted aggregates. Now I am coming to the third important ingredients of the concrete, which is water. Dear students, सबसे basic and crude definitions है water का. Water fit for drinking is also fit for making concrete. You should not use the drain water or any
water which is mixed with the mud and any undesirable materials, that is not permissible. And total dissolved solid level in the water, if it is less than 300 mg per liter milligram, then it is a excellent water. TDS level 300 to 600 milligram per liter, then it is a good permissible, चलेगा. TDS level 600 से 900 मिलीग्राम पर लीटर है तो चले, या इट इज फेयर, कुछ हद तक चलेगा. TDS level in between 900 to 1200 mg per liter, then it is poor quality water. And TDS level is greater than 1200 milligram per liter, then it is a unacceptable water. तो वाटर का कोड जो है, IS कोड is 3025, and water will be tested on all the parameters of a good water. Chloride content क्या है, pH value क्या है वाटर का, that all should be tested in the laboratory before use. What will be the limits of chloride content in the concrete? It is 0.4 per kg, 0.4 kg per meter cube. 1 meter cube में chloride content is allowed equivalent to 0.4 kg. Reinforced concrete or plain concrete containing embedded metals like steel, then it is permissible 0.6 kg. Concrete not containing embedded metal or any material requiring protection from chloride, then it may be allowed to 3 kg. Plain cement concrete में 3 kg तक chloride content allowed है. Durability criteria as per the IS code. Dear students, as I told you, there are 5 types of exposure: mild, moderate, severe, very severe and extreme. हमारा जो IS कोड है 456, वहां पर M20 ग्रेड, M25 ग्रेड तक का स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन दिया हुआ है कोड में. But if you are interested to go beyond M25, suppose you want a higher grade strength of the concrete, M30, M35, M60, M70, M100, means a strength, compressive strength of that. M means mix, 15 means characteristic strength in megapascal. Mix का characteristic strength is 15 megapascal, means 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो इसका प्लेन कंक्रीट का प्रोपोर्शनल लिमिट दिया हो. माइल्ड एक्सपोजर के लिए यू require a 220 kg cement, and water cement ratio is specified here as 0.6. Moderate exposure है तो 240 kg चाहिए, सीवियर है तो 250 चाहिए. M20 के लिए या M15 के लिए. M20 ये, and again it should not be M20. नहीं, M20 is there, but for severe, very severe exposure के लिए M20 के लिए cement quantity is more than 250, 10 kg enhance कर दिए. Extreme के लिए that cement quantity will be more and water cement ratio will be less, 0.4. Now you come to the reinforced concrete. Reinforced cement concrete है तो सी द M20 के लिए हमारा यहाँ पर सीमेंट है M20 250 kg, but if it is a RCC, then what cement requirement will be 300 kg, and water cement ratio is now reduced from water cement ratio M20 के लिए 0.5 था, here it is 0.5. It is more. Cement quantity is more, water cement ratio is also more. And फिर
Again you come to M20, M35, 35 and 40. These are the rough estimations given in IS 456. But dear students, in our IS code, we are able to standardize only to M20 grade of concrete. Beyond that, you have to go for the mixed design. You may ask question why we are going for the mixed design. So the answer is very simple, simpler than very simple, as the available sand in different locations will have different property. Available aggregates here in Gaya and in Andhra Pradesh will be different, and therefore you should go for the mixed design depending upon the quality of the ingredients like water, sand, aggregates, all these are and cement, all these are the ingredients, and therefore we should go for the mixed design as per the stipulations made in IS 10262. Durability criteria के लिए we have to make adjustment in minimum cement content. हम लोग 10 mm aggregates यूज कर रहे हैं nominal size mix के लिए, तो we can raise the cements also, and it will be more discussed in details in when I shall come to the mixed design. Now we see this graph minutely. On x-axis, water cement ratio is plotted, and the y-axis you see strength is plotted. Now you see the water cement ratio and strength relationship. There is an inverse relationship between the water cement ratio and the strength. Now we see here water cement ratio is 0.6. It is more. Now you see the strength less. यहाँ पर इस सारे ग्राफ का आप देखो, strength is less. When your water cement ratio is reduced, as for example here it is 0.35, then you see the strength is more. That I want to say here, the strength and water cement ratio is inversely proportional. If water is more, strength will be less. If water is less, strength will be more. That you should keep in your mind. Now the important parameters for measuring the consistency and workability of the concrete at the site, and this is a simple test which is known as a slump test at the site. सारे बच्चे, सारे छात्र पढ़े होंगे slump test बिल्डिंग साइंस के किताब में. It is a frustum of cone जिसका कि lower diameter is 200 mm, higher diameter, top diameter is 100 mm, the depth is 300 mm. इसमें हम कंक्रीट को रैम करके मिक्स करते हैं, and you just lift the slump cone. So slump is an important parameters for measuring the workability and consistency of the concrete. Now in mass concrete, जहाँ बहुत सारा यूज हो रहा है कंक्रीट का, तो वहाँ पर we need a low slump concrete 25 to 75 mm, and compaction factor is needed 0.8 to 0.8. कोर्स है, मीडियम स्लम्प चाहिए हमें, तो अब स्लम्प का वैल्यू 100 mm, एंड जैसे ही स्लम्प वैल्यू बढ़ेगा तो कंपैक्शन फैक्टर नेचुरली बढ़ जाएगा 9.9 to 9.2, and you increase the slump more 100 to 150 for foundation work or pumping of the concrete
or for piling work, you required the more slump. Then compaction factor will be more, so that the concrete should be naturally settled, and making a dense concrete, reducing the voids, natural compactions हो जाएगा by increasing the compaction factor. This is the issue that you should always take care of all these issues at the site. Now I am coming to the concrete mix design. अभी तक जो बात किया वो IS 456 में जो दिया हुआ है स्टैंडर्ड मिक्स अप टू M20 ओनली, M15 का, M10 का और M20 का स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस, वाटर कंटेंट and cement quantity is given in IS 456. But beyond M20, you should mixed design. What is mixed design? It is defined as the appropriate selection and proportioning of the constituent materials to produce a concrete with a predefined characteristics in the press and hardness. This is the definition of concrete mixed design. In general, concrete mixes are designed in order to achieve a defined workability, strength, and durability. Three important parameters: workability, strength, and durability. Then we have to select and proportioning of material dependent upon the structural requirement of the concrete, the environment to which it is exposed, and the job site conditions, especially the methods of concrete production, transportation, placement, compactions, and finishing. And we have to see the available raw materials. Now, main aspect to be considered in mixed. So, तीन component है that I have already discussed. The main is the strength, and it should be durable, and it should be workable. Workability depends upon the mean size of the aggregates, cohesions, and slump. Here three important parameters है workability measure करने का: mean size of the aggregates, cohesions, and slump. Strength को measure करने के लिए there are characteristic strength or specified strength and the target mean strength. Margin factor we have to select. And durability depends upon the exposure conditions. ये three important mixed design के parameters है. My dear student, you should always remember strength, workability, and durability. Limits of mean size of the aggregates. You see here, mean size of the aggregate should be 3D by 4. Diameter of the reinforcing bar times divided by 4. इससे less होना चाहिए, so that the aggregate should be placed in between. Or 3C by 4. Here it is reinforcing bar has been shown, and the spacing of that from the end is given as C. Therefore, this should be 3C by 4. Again, in T-beam, it should be less than E by 5. And in another type of foundations, here on the ground, it should be less than E by 3. This is the mean size of the aggregate. Then you have to select the size of the aggregates depending upon all these parameters. What type of factors which will influence the workability or consistency or slump, which is dependent upon the water content in kg per meter cube or water cement ratio, fineness modulus of the aggregates. Fineness modulus depends upon the size of the aggregates, use of water reducer,
which is plasticizer or super plasticizer, type and shape of the aggregates, and intertend air. There are other secondary factors, which is the mixed temperature, aggregates, dust, cement type, addition of silica fume, fly ash, slag, fiber, etc. Durability constants. Durability depends upon the water cement ratio and minimum cement content of the mix. Ratio is more, then what will happen? There will be more voids, more porous concrete we are going to make, and the ingress of moisture would be possible, and therefore durability will be reduced. The strength will be also affected by water cement ratio, the strength of the cements, type and shape of the aggregates, and intertend air content. There are other secondary factors such as temperature and many other parameters. Now you see the aggregate moistures. Suppose aggregates is oven dry and air dry. Here in this condition we need more water. And the best condition, ideal condition is saturated, surface saturated dry aggregates. This is the third one. This is the ideal conditions. And suppose it is moist. So free moisture will be available there. Then the specified water should be reduced. You have to subtract the water to make a good result. Now you should come to the design steps as per the stipulations made in IS 10262. This code is published in 2009. The recent phenomena. Before that, we did mixed design by different criteria, but here it is more simplified nowadays. Now, important steps, which is first step, Ft equivalent to Fck plus K into S. What is Ft? Which is a target mean compressive strength at 28 days, which is more than the characteristic strength of the concrete at 28. Generally, we fix target strength more than the characteristic strength. Then, my dear student, you can raise questions. Why it is? Because at the site conditions is not an ideal conditions. There are innumerable factors which will affect the strength of the concrete. It may be weather conditions, it may be another innumerable conditions, controlling of water cement ratio, compactions, curing. All these are the uncertainty which are expected to be encountered. And therefore, we fix the target strength more than the characteristic strength. As per the IS code, it is taken as 1.6 and standard deviation. Now, dear students, you see this graph. This graph is showing the mean strength of
a concrete cube is 30 compressive strength. But if you test all the sample at the site, some results are coming less than 25 in this unit. And some strength is more than 35 to 40. And in this case, 5% of the sample tested, it may be treated as fractile than the target strength. And these are the conditions. This will be also discarded and this will be also discarded. Now in the IS code it is mentioned that M10 and M15 के लिए you should take the value of standard deviations as 3.5 Newton per mm square. Or M20 and M25 grade of concrete, you should assume the value of standard deviations as 4. And 30 to 50 के लिए standard deviations will be 5 Newton per mm square. तो आप देखो, suppose I am going to make a concrete of M25 grade of concrete. Then target strength will be 25 plus 1.65 to 25 के लिए into 4. Here for M25 it is given as 4. So 1.6 multiplied by 4 is 6.6. 25 plus 6.6, it is 31.6. So our characteristic strength is 25. Then target strength is 21.6. As per the IS 456 stipulation. Now this graph, water cement ratio and permeability. You see water cement ratio is more than 6 here. बीच में है 0.65 मान के चलो. अब 0.65 से ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो जैसे ही रखोगे तो ये कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बहुत बढ़ते चला जाएगा. यू सी द राइज हियर. उसके पहले स्लोली है. यू सी हियर. यह परमेबिलिटी कोफिशिएंट्स जो है इधर बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं है. 0.6 तक प्रोपोर्शनल बढ़ रहा है. लेकिन जैसे ही वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ से थोड़ा बढ़ा देते हैं 0.6, ऑल ऑफ ए सडन राइज होता है परमेबिलिटी का, विच इज वेरी बैड फॉर द कंक्रीट. इट हैज बीन रिप्रोड्यूस फ्रॉम द नेवेल बुक. नेवेल का किताब कंक्रीट का टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा किताब है. आप सब बच्चे आप इसको पढ़िएगा ध्यान से, खरीद लीजिए. लो एडिशन है, 300-350 में मिल जाएगा. नेवेल बुक, दिस इज एक्सेलेंट बुक, एक्सेलेंट कमेंट्री made on the quality of concrete. Nevel ka kitab. Here you note down. So how we should select the water cement ratio? Given in table 5 IS 456. And we should make a estimations of, by water cement ratio we shall estimate the value of cement. Again, that table I have already shown in the previous slide. Again, it is given here. Selection of water content. Now, I told you
कि aggregate less than 20 mm size is more preferable. Water content given in IS code 456 and 10262 is 186 kg per meter cube. पर मीटर क्यूब होना चाहिए था ऊपर में, but it is missing per meter cube. Now you see nominal size of aggregate is 10 mm. सपोज कीजिए बहुत फाइन मेश में हमको कंक्रीटिंग करना है, then I am going to reduce the size of aggregates at 10 mm. तो जैसे ही साइज ऑफ एग्रीगेट्स कम हो जाएगा तो वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा. तो वाटर कंटेंट इज 208. 40 mm एग्रीगेट्स जैसे ही हो जाता है, साइज ऑफ एग्रीगेट्स बढ़ गया तो सरफेस एरिया कम हो गया, वाटर रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा 165. दिस इज फॉर द सेचुरेटेड सरफेस सेचुरेटेड ड्राई कंडीशंस. स्लम इज 25 to 50 mm के लिए दिया है. एंड देयर इज कमेंट्री फॉर दिस. अगर स्लम 25 mm से बढ़ाएंगे तो वाटर विल इंक्रीज बाय 3%. तो 186 3% से बढ़ेगा, then it will become 191 point something 6 kg. Now there is important table given in 10262 which I have reproduced here. हम बेहतर है 20 mm पर चले. How to calculate volume of the coarse aggregate? 20 mm size के लिए you see in the second row, 20 mm size के लिए the volume of the aggregates in the concrete is 0.66 और zone 4 बहुत फाइन होगा, सैंड तब 0.66. जोन 3 उससे कम फाइन है, 0.64 वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट्स होगा, और जोन 2 थोड़ा कोर्सर हो गया उससे, देन इट इज 0.62 and again it is 0.60 और जोन 1 कोर्सर के लिए. एंड वाटर सीमेंट रेशियो इज 0.5 and this table I have taken from the IS code 10262. आप फ्री डाउनलोड है या इंटरनेट पर आप जाइएगा, you will get it. Now corrections is required there. तो थोड़ा बहुत करेक्शंस वाटर सीमेंट रेशियो में रिक्वायर्ड है फॉर कोर्स एग्रीगेट वैल्यू एंड वाटर सीमेंट रेशियो फॉर पंपेबल मिक्स, that will be taken care at time of calculations. Now you come to the side effect of aggregates. Generally we shall use 20 mm less aggregates. तो इसका ग्रेडिंग का क्या कंडीशंस होगा? ग्रेडिंग का क्या होगा जब सब चीज मिला दिए, इसमें एग्रीगेट्स भी 10 mm भी मिक्स कर दिया, तो ग्रेडेड एग्रीगेट्स का नॉमिनल साइज बाय वेट 40 mm से 100% विल पास, 20 mm से 95 to 100% विल पास, 10 mm से 20 to 55% विल पास, एंड 4.7 से 0.2%, और 16 mm and 12. So we should focus on the second column for the time being. Now nominal size aggregates का percentage passing का, it is reproduced. This is also reproduced IS383 लिखा हुआ है ऊपर में, and this is also a table given in IS383. 20 mm nominal size aggregates will pass through the 20 mm size 95 to 100%, 30 to 50%, given 600 microns से 10 to 35%,
and 300 micron 0 to 6%. Now I am coming to the calculations. Then volume of concrete 1 meter concrete के लिए I am going to calculate the value of ingredients. For M20, M25, M25 के लिए टारगेट स्ट्रेंथ विल बी 31.6. आप नोट कर लीजिए कहीं पर. वाटर सीमेंट रेशियो इज 0.5. हेलो, 0.5. Water requirement as per the IS stipulations is 186 kg. पीछे आपको दिया था 186 kg. तब जब वाटर 1 मीटर क्यूब के लिए 186 kg है तो सीमेंट का वैल्यू निकल जाएगा. सीमेंट का वैल्यू निकल जाएगा 186 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 विल बी how much? Then cement value will be calculated. It will 186 multiplied by 2. 372 kg will be the weight of the cements. The volume of the cement we shall calculate 372 divided by a specific gravity cement. अगर OPC यूज कर रहे हैं तो it will be 3.15 multiplied by divided by 1000. It will give you the value of cement. Volume of water हमें मालूम है 186 kg है तो 186 kg ही हो जाएगा. केमिकल एडमिक्सचर्स अगर अप्लाई कर रहा है तो ये मास ऑफ द सीमेंट मटेरियल 2% से रफली हम कैलकुलेट कर लेंगे. 2% उसका जो है केमिकल एडमिक्सचर्स ऐड कर देंगे एज पर द एस्टिमेशन. अब ये तीनों का वॉल्यूम निकाल लिया. 1 मीटर क्यूब माइनस डी प्लस सी, यह वॉल्यूम निकल जाएगा. यह मास ऑफ द कोर्स एग्रीगेट्स इसी से निकल जाएगा. वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स 0.6. अगर सैंड जोन 2 का है तो आप 0.62 होगा. स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फाइन एग्रीगेट्स. अब ग्रेडेड एग्रीगेट्स में के लिए वी हैव टू डिसाइड बाय अप्रोक्सीमेशन. ग्रेडेड बनाना है तो ये फाइन सैंड का वैल्यू क्या होगा और जो कि उससे पास कर जाए, जो सीव एनालिसिस है. दिस इज द मेथड फॉर arriving at the ingredient amounts in kg and or in volume. This is the basic of ABCD of concrete mix design. वो स्लाइड दिखाना वो जो मेरा था. वन मोर एक कैलकुलेशंस है, इसमें प्रिंसिपल यही है बट वन कैलकुलेशन शीट आई एम गोइंग टू शो यू.
A typical example of concrete mix design of M30. Characteristic strength is given here M30. थोड़ा और इसका साइज बड़ा करो. Now characteristic strength is 30 megapascal. Maximum size of the aggregates is 25 to 20 mm. Degree of quality control as stipulations made in 456, and degree of workability required at the site is 25 to 30 mm. 25 to 30 mm क्यों है? Because we have to construct a road from this concrete. रोड बनाने के लिए the workability slump is required low, and type of exposure as per the definition specifications made in the IS 456 severe conditions, पेज नंबर 20 में. OPC सीमेंट यूज कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू यूज OPC सीमेंट. पहला स्टेप सीमेंट्स के लेबोरेटरी टेस्ट से हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका निकाला 3.14. इसका इनिशियल सेटिंग टाइम लेबोरेटरी में निकाला 144 मिनट. फाइनल सेटिंग टाइम 212 मिनट. यह सब आप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे. इसको यह एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर 3 स्पेसिफिक ग्रेविटी का 2-3 पेज में आपका जाएगा. तो 3 पेज आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गया. फिर 3 पेज इनिशियल सेटिंग टाइम का, तो फिर 6 पेज बन गया. फाइनल्स निकालने के लिए 4 पेज निकालेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, तो ये 10 पेज बन गया. साउंडेंस निकालने के लिए अगर 2-3 पेज और हुआ तो 15 पेज बन गया. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए इनिशियल 3 दिन 7 दिन 28 डेज का कैसे निकाले, फिगर बनाए, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का पिक्चर लिए, तो 2-3 पेज यह भी बन जाएगा. उसके बाद स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी वैल्यू निकालना है, 3-4 पेज यह बन गया. तो यह सीमेंट टेस्ट में आपका 20 पेज का एक रिपोर्ट प्रोजेक्ट का बन गया. और इससे क्या होगा, यू विल लर्न हाउ टू डू ऑल दी ऑपरेशंस. तो यह सीमेंट का इतने जो क्वालिटी पैरामीटर्स है फिजिकल, दिस इज द फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स, नॉट केमिकल पैरामीटर. सीमेंट केमिस्ट्री हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं. वी आर बोदरिंग अबाउट द फिजिकल वैल्यू ऑफ द सीमेंट. तो ये 4-5-6 एक्सपेरिमेंट आपको लैब में करना. उसके बाद यू कम टू द फाइन एग्रीगेट्स. स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे. कैसे निकालना है, इसका प्रोसीजर लिखना है. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक अलग पार्ट हुआ. सील्ड कंटेंट के लिए सीव एनालिसिस करना है. वाटर एब्जॉर्प्शंस का फिर स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है एक्सपेरिमेंट का, दैट यू हैव टू परफॉर्म. मॉइस्चर अवेलेबल इन सैंड निकालना है. फिर इसका ग्रेटिंग साइज निकालना है. सीव एनालिसिस करना है. तो सीव एनालिसिस करके आई हैव कम टू दिस रिजल्ट. परसेंटेज पासिंग 100%, 98, 88. तो यह जो टेबल IS 456 में दिखाया अभी 383 का, इससे आई हैव confirmed that this is falling within the zone 3 limits as per the stipulations mentioned in 383 1970. उसके बाद कोर्स एग्रीगेट का फिर टेस्टिंग करना है. स्पेसिफिक ग्रेविटी 10 mm का 20 mm दोनों का निकाले. डिलेटेरियस मटेरियल का परसेंटेज निकाला, इम्पैक्ट वैल्यू निकाला, क्रशिंग स्ट्रेंथ वैल्यू निकाला, वाटर एब्जॉर्प्शंस ऑफ एग्रीगेट्स एंड फ्री सरफेस मॉइस्चर अवेलेबल इन द एग्रीगेट्स. यह सब किए. करने के बाद यह टेबल को बनाया हमने 20 mm का. सीव एनालिसिस किया. इससे फाइनेस वैल्यू निकालेंगे एग्रीगेट्स का. फिर 10 mm का निकाला. इससे फाइनेस वैल्यू निकालेंगे एग्रीगेट 10 mm का. और फिर इस टेबल को
कंबाइन कर दिया 10-20 एक टेबल में कन्वर्ट कर दिया फाइन एग्रीगेट्स का कोर्स एग्रीगेट का सीव एनालिसिस वैल्यू. नाउ यू कम टू द पॉइंट जो अभी हमने बताया थ्योरेटिकल बात. नाउ इट इज ए प्रैक्टिकल कैलकुलेशन बेस्ड. तो हमने बताया कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज 30. तो टारगेट स्ट्रेंथ वी शैल फिक्स मोर देन. क्यों करेंगे? because of the variation in the quality of constituent material used, variation in the mix proportion due to batching process, variation in the quality of batching and mixing equipments available, the quality of supervision and workmanship, and variation due to sampling and testing of the concrete specimens. तो एंड क्यों निकाले या फिर टारगेट स्ट्रेंथ क्यों निकाले? तो यह टारगेट स्ट्रेंथ यह निकाले कि जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगा इट इज स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल. वहां दिखाए थे उस ग्राफ में स्टैंडर्ड डेविएशंस का कि इतना रिजल्ट जो है फ्रैक्टाइल होगा. इट विल बी डिसाइडेड बट लिमिट इज फिक्स्ड ओनली टू 5% हियर. तो यू कम हियर डियर स्टूडेंट्स. तो 30 के लिए हमारा टारगेट स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड है 38. हमने बताया था उस पिछले वाला टेबल कि इसका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन 5 होगा, ये वैल्यू 165 होगा. तो देन इट हैज कम टू 38.25 एंड आवर रिक्वायरमेंट इज ओनली 30 मेगापास्कल न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो इस वैल्यू को लिख करके हमने कैरेक्टरिस्टिक टारगेट स्ट्रेंथ फिक्स करनी है. नाउ यू कम टू दिस. अब देखिए रियल पोजीशन देखिए. एज पर द स्टेपुलेशंस मेड इन IS 456 एंड IS 10262 पेज नंबर 3 टेबल 2 में दिया हुआ है द मैक्सिमम वाटर कंटेंट विल बी 186. वाटर सीमेंट रेशियो एज पर द IS कोड स्टेपुलेशंस इज फिक्स्ड एज 0.45 for M30. So 186 divided by 0.45, it will give you the value of cements in kg 413 kg per meter cube. आपका सीमेंट का वैल्यू निकल गया. वाटर हो गया 186 kg. ठीक है. कोड कहता है कि यह माइल्ड एक्सपोजर नहीं होगा, सीवियर एक्सपोजर होगा. गलती है. और सीवियर एक्सपोजर द मिनिमम सीमेंट वैल्यू इज 320 kg कोड में दिया हुआ है, बट वी आर गेटिंग मोर 413 ग्रेटर देन 320. यह दिया हुआ स्टेपुलेशंस इट इज मोर देन दिस, बट सीमेंट कंटेंट शुड नॉट बी मोर देन 450 एंड इट इज लेस देन 450. देयरफॉर आई एम राइटिंग हियर रिमार्क्स एज ओके. नाउ हम ऊपर में जो था सीमेंट सैंड का जोन जो था इट इज पॉइंट इन जोन 3 सीव एनालिसिस करके लाया. तो जो उस टेबल में दिया हुआ था रिप्रोड्यूस 1062 में कि इसका वॉल्यूम होगा 0.64 1 मीटर क्यूब में एग्रीगेट्स का. तो अब देख लीजिए 1 में 0.61 माइनस 0.64 इक्विवेलेंट टू 0.63. Now you come here वॉल्यूमेट्रिक. अब मेजरमेंट में हम चल रहे हैं. वेट से सीमेंट निकाले, वाटर निकाले. तो आप देखिए वॉल्यूम ऑफ सीमेंट्स हाउ मच इट विल बी 416 डिवाइडेड बाय 3.15 स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड मल्टीप्लाइड बाय 1000 इट इज 0.132 मीटर क्यूब. 1 मीटर क्यूब में द सीमेंट वॉल्यूम विल बी 1.32. मिनिमम बहुत ऑक्युपाई कर रहा है स्पेस को वॉल्यूमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से. वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी, इसका वेट कम था, वाटर का वेट कम था, बट इट इज ऑक्युपाइंग मोर वॉल्यूम इन कंपेरिजन. सीमेंट का वैल्यू था 416, ये 186, बट इट इज ऑक्युपाइंग 0.132 वॉल्यूम
मीटर क्यूब में, और ये इट इज ऑक्युपाइंग मोर वैल्यू। तो वॉल्यूम में वाटर इज ऑक्युपाइंग मोर वैल्यू देन द सीमेंट्स। अब वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स अब हमारा बचा का 1 मीटर में दिस माइनस दिस इज 0.682। यह हमारा एग्रीगेट्स का वॉल्यूम निकल गया। इसमें कहता है सैंड का वैल्यू जो होगा वह पॉइंट, दोनों का जो वैल्यू होगा वह 0.62 होगा, 682 होगा। इसका 0.62%, 6.64% will be value of sand. This multiplied by 6.2 multiplied by 0.64, you will get this value 2. And rest will be the coarse aggregate. इस ढंग से इंग्रेडिएंट्स का प्रोपोर्शन हमने निकाल लिया। और कई ट्रायल करने के बाद I have made 4 trials. It is not completely science and mathematical calculation. It depends upon the trial, because you have to get some specified value of slump. तो हम 3, 4, 5 ट्रायल किए, तब हमने पाया M30 के लिए I need a water 190 kg, 186 से स्टार्ट किया था। ट्रायल के बाद 190 kg हमको वाटर चाहिए था। सीमेंट हमको 425 kg हो गया, बढ़ गया। पहले 413 से लिया था, ट्रायल के बाद नाउ इट हैज इंक्रीज 425 हो गया। फाइन एग्रीगेट 0.264 हो गया वॉल्यूम में, और यह 10 mm 1.178 एंड ये फाइनली 20 mm का यह वॉल्यूमेट्रिक प्रोपोर्शन हमें मिल गया। अब इसको कन्वर्ट करना है बाय वेट। अगर वेट से करेंगे तो हमारा फाइनल जो वैल्यू हो गया 190 kg हो गया वाटर, 425 kg सीमेंट्स एंड 694 kg फाइन एग्रीगेट सैंड, 489 kg 10 mm एंड 20 mm 650 kg। यह हमारा बाय वेट प्रोपोर्शन निकल गया केजी में पर मीटर क्यूब में। इतना मीटर क्यूब में इतना केजी मटेरियल्स हमको चाहिए। अब रेशियो हमको सीमेंट पर बैग में निकालना है, तो पर बैग 50 kg का होता है। 50 kg के लिए हमको वाटर का रिक्वायरमेंट 22.35 होगा, फाइन एग्रीगेट 81.5 kg होगा, 10 mm 57.50 होगा, 20 mm 76.50 होगा। यह वॉल्यूम वेट और वॉल्यूम दोनों से हमने एग्रीगेट्स निकाला। रेशियो सीमेंट सैंड एग्रीगेट्स का बाय वेट निकाल लिया हमने 1.163 एंड 2.68। फाइनली इसको 28 डेज क्यूरिंग के बाद हमने टेस्ट किया, तो हमारा जो पैरामीटर्स आया टेस्ट का स्ट्रेंथ आया, रिजल्ट वह 26.36 आया 7 डेज में, और 28 डेज में 40.16 आया। हमारा टारगेट था 38.25 का। We have achieved more than this, but if this achievement is in the laboratory, control conditions, site conditions will be different. तो साइट पर अगर बना भी दिए इसका, तो हमें रिक्वायरमेंट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का था विथ ऑल द अनसर्टेनिटी हमें 30 आ जाएगा। दिस इज द बेसिक assumptions which will meet the required strength at the site. Thank you very much. अब लड़कों को विपल्लव अनम्यूट कर दीजिए, किसी को कोई बात करनी है तो इस बात। Yes, हेलो, thank you for nice lecture. If any student have any questions, please unmute yourself. anyone, my dear student? देखो कितना है, इसको बंद कर दो। सबसे रिविजन है वीडियो
विपल्लो मेरा वीडियो को अलाउ करो। Yes, sir. Yes, students, you may raise question. मुझे 10 स्टूडेंट चाहिए जो मेरे साथ प्रोजेक्ट कर सके। आई नीड ए ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स। कंक्रीट मिक्स में 3rd ईयर का या फाइनल ईयर का। विपल्लो शायद लड़के नहीं सुन रहे। Yes. Anyone? मुझे 10 स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ जाइए जिसको प्रोजेक्ट करना है मिक्स डिजाइन पर। 10 स्टूडेंट should send me an email of 7th semester. Students can raise your hand, those who are interested to do project. Vivek Kumar Singh, you can unmute yourself. आपने आपको unmute करके। Yes, good afternoon, sir. Yes. हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून। विवेक कुमार सिंह जी बताइए, प्रोजेक्ट मेरे साथ करना है तो आप तैयार हो जाइए। Yes, sir. I want. You tight your belt, prepare mentally yourself for doing project or work on the mixed design, Okay. and form a group of 10 students. Okay, sir. और वर्चुअल लैब से आप कंक्रीट सीमेंट टेस्ट करना शुरू कर दीजिए। आई नीड ए नेम ऑफ 10 स्टूडेंट्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन द वर्चुअल लैब प्लेटफॉर्म। Okay, sir. I will manage. कॉलेज लेबोरेटरी में आने का जरूरत नहीं है। And this project will enhance your knowledge about the concrete. Read the books. Neville and Sethi इंडियन राइटर का है, नेविल फॉरेन राइटर का है। एंड आपका नॉलेज विल इनहेंस, कॉन्फिडेंस लेवल विल सर्च, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी सर्च कर जाएगा। You have come here to acquire knowledge, acquire skills, developing a right kind of attitude. बोलिए। Yes, sir. I am ready, and I will make an students group. I will try it at my level. Yes, come forward. Anyone? Anyone who सब अनम्यूट कर दीजिए जितने हैं। विवेक कुमार सिंह म्यूट है लगता है। No, sir. हाँ, विवेक कुमार सिंह जी अब बताइए, आप किस ईयर में हैं? फाइनल ईयर या 3rd ईयर? 7th semester. Final year. 7th। तो आप तैयार हैं प्रोजेक्ट Yes, वर्क sir. करने I'm के लिए? ready. I will do project with you. प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए तैयार हैं तो यू सेंड मी द ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स फॉर प्रोजेक्ट। Okay, sir. 10 स्टूडेंट। any other students from 2nd year or 3rd year, you can raise your hand and unmute. Good afternoon, sir. हाँ बोलो, क्या नाम है? Sir, Rani Priya. Sir, I'm 2nd year क्या नाम student. है? Can I join? Rani Priya. हाँ, रानी प्रिया, तो मेरा सुझाव है तुमको बिल्डिंग साइंस पढ़ना है। 2nd ईयर के सिलेबस में होगा, मॉड्यूल में होगा। Yes, पढ़ा sir. है, पढ़े हो ना? तो अभी तुम बेटा क्या करो कि वर्चुअल लैब
पर एक्सपेरिमेंट शुरू, जो जितने बोला है सीमेंस का, you perform all these experiment on the virtual lab platform by taking a हेलो सर हम इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं क्या? क्या? सर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ हम कर सकते हैं, बस उनको मिक्स डिजाइन थर्ड ईयर में सिखाएंगे। अभी एक्सपेरिमेंट करने के लिए सीख लो वर्चुअल लैब पर, फॉर इनहेंसिंग योर नॉलेज। सिलेबस में क्या है नहीं है दैट आई डू नॉट नो, बट तुम यह सीमेंट का इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू टू मेकिंग करियर इन सिविल इंजीनियरिंग। तो अभी सीमेंट का 6 टेस्ट हमने बताया, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल टाइम, कंसिस्टेंसी, साउंडनेस, strength, it should specific gravity, it should be performed on the virtual lab platform. Virtual lab platform पर भी करोगे तो you will go through the literature, you will go through the steps involved in experimentation and you will learn how to measure specific gravity of the cement. और वह जो है अपना रिकॉर्ड तैयार कर लो वर्चुअल लैब में और उसको रखे रहो, फिर आगे थर्ड ईयर में आना, you can do the project work. Okay. So this will your background work. फिर एग्रीगेट्स का कर लो, सीव एनालिसिस कर लो, इम्पैक्ट टेस्ट कर लो, क्रशिंग वैल्यू टेस्ट कर लो, एब्रेशन वैल्यू टेस्ट करो। तो इतने पैरामीटर्स जान जाएगा तो योर कॉन्फिडेंस लेवल विल बी सर्च लाइक एनीथिंग। तुमको अभी लगेगा कि आई हैव बिकम ए गुड सिविल इंजीनियर। बच्चे यहाँ ध्यान नहीं देते हैं पढ़ने पर, पता नहीं क्यों नहीं देते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू मोटिवेट ऑल द स्टूडेंट्स हियर who have come here to capture knowledge, and I am here as a principal to nurture the career of all my students. This is my pleasure. I have put my head and heart all together to help you to come up. Yes, But sir, sure, sir. Students are not prepared for that. तो हम तो चाहते हैं 5 लड़के 10 लड़के मोटिवेट है, the whole class will be motivated. या फिर एक चेन बन जाएगा। और तुम क्या नहीं कर सकते हो, बच्चे यहाँ से टॉप कर रहे हैं एनपीटीईएल में, सभी बच्चे अच्छे हैं, सभी में पोटेंशियल है, एंड यू शुड फोकस योर अटेंशन टुवर्ड्स कैटरिंग नॉलेज। तुम्ही लोग में से कुछ बच्चे टॉपर हो रहे हैं और अभी हैकाथॉन करा रहे हैं, उसमें शामिल हो, अपना हैकाथॉन इवेंट्स में तुम लोग को प्रैक्टिस करने से यू कैन अचीव एनीथिंग एज यू लाइक। जैसा बन जाओगे, गीता में कहा है मैन इज मेड बाय हिज बिलीफ एज ही बिलीव्स ही इज एज। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होते हैं, जो चाहे वह हो सकता है। लेकिन गीता का एक दूसरा संदेश है कि माइंड इज बिहेविंग लाइक ए टर्बुलेंट ओशन, इट इज स्टबबॉर्न, इट इज अनरूली, डिफिकल्ट टू कंट्रोल एज डिफिकल्ट टू कंट्रोल विंड। तो उसके लिए भगवान कृष्ण थे। मैं तो भगवान नहीं हूं, बट आई एम योर टीचर, आई एम हियर टू हेल्प यू, आई एम हियर टू नर्चर योर कैरियर, आई एम हियर टू इनकलकेट वैल्यू इन योर सेल्फ एंड create a good environment for learning here. And all teachers are prepared for all these things, all challenges, but students are very casual in their approach, which is very sad. So Bipalla, anyone और कोई और किसी को कोई क्वेश्चन है या सर के साथ प्रोजेक्ट करना है तो अपने आप को अनम्यूट करो। थैंक यू, आप क्लोज कर दो। Thank you sir for nice lecture. This is very beneficial for the students. Okay, thank you very much. I am here, always available for my students. Thank you very much. Thank you. Thank you everybody.